Good morning, students. We'll start now. Good morning, sir. Have you understood this concept? Access specifiers, private, public, protected, default. Yes, sir. You should understand when to use which one. Okay. So when you want to hide some data, you declare it as private, right? If there is no confidential information, so you make it that number as public. Okay, then protected. So if you want to restrict the access but you want to give access to your subclasses, then you declare it as protected. Okay, and if you're building a project and all the classes are in one package, okay, and your members should be visible within that package, okay, then you declare your members as default. Okay, and by member I mean two things, right? Instance variables and methods, right? Okay, so today's topic is modifiers. Okay, so let us see which modifiers we have. Uh, we have studied one of the modifiers, that is static, right? So what modifier means what? Okay, so this defines which thing can modify your the values of your members. Okay, for example, static. Okay, but if we declare a static variable, can object modify that member? If I declare any variable as static variable, can any object modify that member? No, right? We know that static variable are class variable. Okay, how we access static variable? So if I have class A, okay, I write a dot. Let's say my variable is okay. So I will declare class A. उसके अंदर static variable है, static variable, static int काउंटर. एक सपोज एक काउंटर वेरिएबल है जो कि काउंट मेजर कर रहा है और इनिशियलाइज है जीरो से. सो हाउ वी एक्सेस काउंटर वेरिएबल? आई राइट a डॉट काउंटर, राइट? So this modifier is controlling how the variable is getting modified. Okay, that is the purpose of this modifiers. So we have several modifiers. We'll study a few of them in today's lecture. Modifiers determine or define how the data members and method are used in other classes and objects. The main difference between access specifier and modifier is that access specifiers defines the accessibility of the data. Okay, so access specifier में हमने पढ़े हैं public, private, protected, right? So it defines the accessibility of the data members. Or modifiers will determine how these methods are used and modified by other classes. Okay, so it defines the modification. So various modifiers permitted in Java are static. We have already seen uh, three uses of static, right? Static variable हो सकता है, static method हो सकता है, और static block हो सकता है, right? So today we are going to study final. Okay, we'll study abstract in next unit, and then we have native also. Okay, native is not there in our syllabus, so we are going to focus on final today. Okay. Now, when to use final keyword? Okay, so as name suggests, so we'll say final when jab final version is ready. Okay, so no need to modify further. Then we will say that this is a final. Like when I want to define pi value, we know that pi is going to be 3.14 always, right? This value of pi is final, right? But if I want to calculate simple interest, okay, simple interest, the value of simple interest is going to be changing, right, throughout the
execution of program. So SI will be a variable, right? This simple interest is going to be a variable. Its value is going to change during the execution of program, but pi value, it going to be a constant, right? So I will say final double pi. Okay, so this value of this pi is final. Okay, so you can use final keyword in front of method, variable and class. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, you can use final in front of a variable, you can define a final method also, and you can define a final class also. Okay, so these are the three uses of final keyword: in front of a method, in front of a variable, in front of a class. So when you put final in front of a variable, it defines a constant. Okay, वो variable की value final है, यानी कि वो constant हो गया. ठीक है, वैसे ही final method. ठीक है, so when you define a final method, so you cannot override that method. Okay, so I will demonstrate that what do you mean by method overriding. ठीक है, and then you have a final class also. Okay, final class cannot be subclassed. Okay, वो inherit नहीं कर सकते आप. ठीक है, we will see that also. Okay, so we'll see one by one how it is applicable to these three things. Final modifier indicates that data member cannot be modified. Okay, जब data member modify नहीं होगा, that means it will be a constant. Okay, it will be a constant variable. Then okay, so I will demonstrate this now itself. Okay, so I will start over. Okay, there is nothing inside a hello world program. एक hello world है और उसमें main method है. ठीक है, so here I am defining, so we are talking about final applied on a data member, data member. So let us define double pi equals to 3.14 SYSO pi value before modification equals to plus pi. Okay, so now I have not defined it as final, so this is a normal variable. Now I am just printing its value before modification. So let us run this much code. Okay, as you can see, I am getting pi value before modification 3.14. Okay, then I am just multiplying the old value by 2. Okay, I am modifying the value of pi. Okay, so there will be no problem because pi is still a normal variable. ये हो जाएगा after modification, pi value after modification, so इसका twice आना चाहिए. Okay, so everything is fine, everything is normal up to this point. Now I am defining pi as final. Okay, as soon as I declare it final, I am getting this error. Can you see this underline? Okay, so see, read the error. The final local variable pi cannot be assigned, cannot be changed. Okay, it must be blank and not using a compound assignment. And what is the fix available? Remove final modifier of pi. Okay, either you modify or you comment this value. Okay, so there will be no error now. Okay, so final so नाम से ही पता चलता है कि whatever you are assigning to this variable is going to be final. Okay, ये final value है, don't change it. Okay, so this is regarding when final is applied on a data member. Okay, data member यानी कि variable. ठीक है, next use of, okay, for example, consider a variable that has been assigned a value. If the variable has been declared final, you cannot modify the value of the variable
if you try to do so it will cause a runtime error. Okay, sorry, compile time error ही मिल गया था हमें, right? The next one, a variable declare final is initialized at the time of declared. Okay, जैसे ही आप उसको declare करोगे, this is declaration, right? उसको initialize भी करना पड़ेगा आपको. The final modifier does not allow class to be inherited. Okay, अगर आपका class final है तो आप उसको inherit नहीं कर सकते. Okay, so let us see that. So I am defining class shape. Okay, empty class and class rectangle, and rectangle is a shape, right? So rectangle is extending a shape class. Okay, now up to this point everything is normal. ठीक है, normal एक empty class है और rectangle भी एक अपना class है which is extending shape class. Okay, as soon as I declare this shape as final I'm getting this error. Okay, जैसे ही मैं shape को final करता हूँ I'm getting this error. Now see what is the error. The type rectangle cannot subclass a final class shape. Okay, फाइनल क्लास शेप को वो सब क्लास नहीं कर सकता है. ओके, व्हाट इज अ फिक्स गिवन, रिमूव फाइनल मॉडिफायर. ठीक है, नाउ व्हाई वी हैव दिस कंसेप्ट. ओके, व्हाई वी कैन नॉट इनहेरिट फाइनल क्लास. ठीक है, नाउ व्हाई वी इनहेरिट एनी क्लास, क्यों करते हैं हम इनहेरिट? सर वो क्लास का कोड रीयूज करने के लिए. रीयूज करने के लिए, और हम और स्पेशलाइज करते हैं. ठीक है, वो क्लास को हम और स्पेशलाइज करते हैं, राइट? वी ऐड फंक्शनैलिटी टू दैट क्लास. यस ना, है ना? इसके जो मेथड्स हैं उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. दैट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग. ओके, ये हम पढ़ेंगे. ओवर राइडिंग, सॉरी, मेथड ओवर राइडिंग. तो हम ये जो क्लास है, बेस क्लास है, उसको और स्पेशलाइज कर सकते हैं. ठीक है, बट व्हाट इफ इसको जो भी इम्प्लीमेंट करना था अगर उसने पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया है, ओके, नो, देर इज नो रूम फॉर मॉडिफिकेशन. अगर ऐसा केस है देन शिफ्ट कैन बी अ फाइनल क्लास, है ना? जो भी उसको डिफाइन करना था या फिर प्रोवाइड करना था अगर उसने पूरा प्रोवाइड कर दिया है देन व्हाई नॉट टू डिक्लेयर इट एज फाइनल. डोंट सब क्लास इट, डोंट स्पेशलाइज इट. ठीक है, उसको जो भी प्रोवाइड करना था उसने कर दिया है, डोंट सब क्लास इट. इफ यू वांट टू यूज इट यू इंपोर्ट इट एंड यूज इट. ठीक है, सब इनहेरिटेंस के थ्रू हमें मेथड्स मिलते हैं, राइट? ओके, सो अगर वो पब्लिक क्लास है सो यू कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एंड यूज इट्स मेथड, राइट? सो उस केस में हम फाइनल करते हैं. और आपने एक फाइनल क्लास पढ़ा है, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट फाइनल क्लास? आपने ऑलरेडी एक फाइनल क्लास पढ़ा है. एनीवन? ओके, दैट क्लास इज अ मैथ क्लास. ठीक है, ये ओरेकल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है. यू कैन सी हियर क्लास मैथ, इट इज एक्सटेंडिंग ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ फाइनल क्लास. ठीक है, सो मैथ क्लास में जितने भी मेथड्स है, ओके, ऑल द मेथड्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन दैट क्लास. ओके, ऑल द मेथड्स आर फाइनल देयर. ठीक है, सभी का मेथड प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है. ओके, देर इज नो रूम फॉर एक्सटेंडिंग इट. ओके, सो दैट्स व्हाई दे हैव डिक्लेयर्ड दैट क्लास एज फाइनल क्लास. ठीक है, ये फाइनल है, इसको और ज्यादा आप स्पेशलाइज नहीं कर सकते. गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनल क्लास नाउ. जैसे फाइनल डेटा मेंबर था, ओके, सो इफ द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज नॉट गोइंग टू चेंज देन यू डिक्लेयर इट एज फाइनल. ये मैथ क्लास को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, जितना भी आपको मेथड्स प्रोवाइड करना था दिस क्लास हैज प्रोवाइडेड दैट, सो यू डिक्लेयर दैट क्लास एज फाइनल. इज दिस आर्गुमेंट क्लियर टू यू? सर फिर स्ट्रिंग क्लास फाइनल नहीं है? स्ट्रिंग क्लास फाइनल, ओके, स्ट्रिंग क्लास फाइनल नहीं है. ओके, सो वी कैन चेक दैट.
ठीक है, अगर ये शेप cannot subclass final math, ओके, तो वैसे ही string. What is happening? I think string is not a final class, okay, but ये क्यों नहीं जा रहा है? Okay, string is also final. String is also final. Let me see the documentation. Yes, it is also final class. Okay, so all the methods defined there are final. Okay, so no room of modification there. Okay, so in those cases we declare a class as final. Okay, so by declaring a final, we are restricting, means we are not allowing class to be inherited. Okay, वो inherit नहीं करने दे रहे हैं हम, restriction put कर रहे हैं. Okay, and once you declare a class as final, all the method inside that will become final methods. ठीक है, वो भी फाइनल बन जाती है. नो नीड टू डिक्लेयर मेथड. जैसे कि यहाँ पे देखोगे मैथ की जो भी मेथड्स है, यहाँ पे मॉडिफायर्स में आपको फाइनल नहीं दिखेगा. ओके, बट इट इज इम्प्लिसिटली फाइनल. ओके, वो फाइनल हो ही जाते हैं. It is used to create class that serve as standard and you do not want anybody to modify the methods in a subclass. Okay, हम ये modification allow नहीं कर रहे. ठीक है, that's why we are saying that it is final. अगर आपको use करना है तो you create an object of that and use it and use them in different manner. जैसे कि हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं मैथ क्लास. ओके, मैथ फाइनल है और ठीक है, मैथ के जो मेथड्स है वो स्टैटिक है और स्ट्रिंग के यस ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक रहते हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक नहीं दिखेगा. ओके, सो विल फोकस दैट ऑन दैट लेटर. ओके, सो final modifier does not allow the class to be inherited, that we have seen. Okay, we were talking about this point. It is used to create classes that serve as standard and you do not want anybody to modify the methods in a subclass and use them in different manner. ठीक है, वो modification हमें ये allow नहीं करना है. That's why we declare that class as final. The final modifier has following characteristics. Okay, summary. Final method cannot be modified in the subclass. Okay, so I will give you the demo on this point. Okay, हमने final data member देखा, final class देखा. Now we'll see final method now. Okay, so okay, now this is normal thing, right? Class shape and class rectangle. Okay, so let us define one dummy method called show, and here we are just simply printing shape show. ठीक है, this is just imaginary method called show यहाँ पे. okay, now void show and SYSO, this is rectangles show. Okay, now what is happening here? Okay, so shape has show method. It is inherited in rectangle, right? Rectangle is extending shape. Okay, so this show method will come in rectangle also, right? But rectangle is defining its own version of show. This concept is known as method overriding. ये overloading नहीं है, overriding है. Okay, so subclass is providing its own
वर्जन ऑफ द मेथड. ओके, सो ये जो है ये ओवरराइट हो जाएगा इनसाइड द रेक्टेंगल. ओके, दिस शो विल बी कॉल्ड. ओके, सो लेट अस डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास. rectangle obj equals to new rectangle एंड obj पे अगर आपने शो मेथड कॉल किया. ओके, सो ऑब्जेक्ट किसका है? रेक्टेंगल का, राइट. सो रेक्टेंगल ने खुद का शो डिफाइन किया है. ओके, सो वो शो कॉल होना चाहिए. सो रेक्टेंगल शो आना चाहिए आउटपुट में. Okay, so output is rectangle show. Okay, this concept is known as method overriding. Suppose मुझे ये overriding allow नहीं करना है, ठीक है. ये show का implementation correct है, and I don't want to allow sub classes to change its definition. So I can declare it as final. So as soon as I declare it as final, so see the change here. Okay, so this overriding will not be allowed. Okay, और ये अगर मैं delete कर देता हूँ तो वो एरर चली जाएगी. ओके, ये overriding allow नहीं है. Okay, now still this show method will come to rectangle through inheritance. ठीक है, मैंने सिर्फ overriding allow नहीं किया but inherit होगा. ठीक है, सो यहाँ पे ये show कौन सा कॉल होगा? ये शो का शेप का शो कॉल होगा. ओके, सो लेट अस रन दिस. ओके, शेप का शो. ओके, सो बाय फाइनल मेथड वी मीन वी विल नॉट अलाउ मेथड ओवरराइडिंग. ठीक है, इसको जो भी मॉडिफिकेशन है सब क्लासेस में वो हम अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, so these are the three uses of final keyword. Okay, you can use it with method. Okay, you can use it with variable or you can use it with classes. Okay, so what do you mean by final method? Okay, so by final method you cannot modify that method in subclass. Okay, so you are not allowing method overriding. A final class cannot be inherited. This we know, right? All the method and data member in a final class are implicitly final. All the methods and data members in a final class, okay, will be implicitly final. Okay, that is regarding final keyword. Okay, the last point is a class can be declared as final if you do not want the class to be subclass. Okay, if this is the requirement, you declare that class as final class. Okay, just like the Oracle has done for math class. Okay, everything in that class is final. Okay, it has provided all the implementation, so they have declared that as final. Okay, so don't subclass it, don't change the definition of methods there. Okay, so that is regarding final keyword. Any doubt in this concept? Anyone? No, So sir. this is one of the modifier. Okay, so you are restricting the modification on your members. Okay, it can be a method, it can be a variable. Okay, so we are going to fill this table. Okay, so what we have here, we have studied public, private, protected, default, static, okay, final, and abstract. We are going to study abstract in next unit. Okay, so what we want to study here is, can we have a public class? Yes, right? So we are going to fill this table. Can we have a private class? Yes or no? Can we have a private class? No, sir. No, right? So we'll check this every possible combination: public class, private class, protected class, default class, and we will fill this table. Okay, so let us start. Okay, so can we have a public class? So we'll use this example. Okay, public
Yes, we have studied this concept, right? Okay, that is the restriction, right? The in one file you cannot have two public classes. Okay, so here you can see that hello world is public class. Okay, so public यहाँ पे put करना पड़ेगा tick. Okay, so the next one is private class. Okay, so I will declare this shape class as private. Can we have private class? Okay, so I'm getting error. Now see, illegal modifier for the class shape. Only public, abstract and final are permitted. Okay, so we got the answer for rest of the combination also. So in front of a class, you can have public, abstract and final only. Even protected is not allowed. If I declare it as protected, illegal modifier, okay, remove invalid modifier, okay, this is the fix given here. Okay, only public, abstract and final are permitted. Okay, so यहाँ पे private not permitted, protected not permitted, default. If you don't specify anything you will get default, right? See, the rectangle is default. Okay, there is nothing private, protected, कुछ भी specify नहीं है तो default मिलेगा. Okay, so this is allowed. Can we have static class? No. स्टैटिक के हमने तीन यूजेस ही पढ़े हैं, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक, राइट? सो यू कैन नॉट हैव स्टैटिक क्लास. यू कैन हैव फाइनल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, सो ये ठीक, ये डिफॉल्ट हो सकता है, फाइनल हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है. एब्स्ट्रैक्ट हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, सो वी हैव फिल्ड द एंट्रीज फॉर क्लास. ओके, कैन वी हैव अ पब्लिक मेथड? प्लीज बी क्विक. Yes, sir. Yes, public method. Generally, we declare method as public only. Okay, so public. Can we have private method? Can we have a private method? Let us check. Yes, we can have a private method. No problem. Error यहाँ पे है, ठीक है, but यहाँ पे नहीं है. Okay, so we can have public method, private method, protected हो सकती है. यस, अगर प्राइवेट है तो प्रोटेक्टेड भी रहेगी. सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव प्राइवेट है, ठीक है, उससे लूज हो ही सकता है. डिफॉल्ट, इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग, इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग यू गेट अ डिफॉल्ट. ओके, वो भी अलाउड है. Can we have a static method? Yes, we have studied that we can have a static method. The restriction is that inside the static method you can use only static variables, right? So we have studied that, and we can apply final in front of a method. Just now we have seen, in order to avoid the method overriding, you declare any method as final, right? तो ये भी allowed है. और abstract हो सकता है क्या? Abstract भी allowed है. Abstract. ओके, एब्स्ट्रैक्ट में एम्प्टी बॉडी देना पड़ता है, आई थिंक. यस, I forgot the syntax of abstract class, abstract method. Is it correct? What is the syntax of abstract method? This is correct, I think, right? When you have abstract method, you have to declare a class as abstract. Yes. Okay, this is the syntax of declaring a abstract method. You don't have to provide the body for that. Okay, just आपको एक syntax देना होता है, ठीक है.
So in front of a method, abstract keyword is allowed. Okay, that is the thing. We are going to study this in later. Okay, so abstract method is also there. ठीक है, ये भी exist होता है. Then instance variable. Okay, so let us check this applicability of this modifiers and specifiers for instance variable. ठीक है, so normal shape class define करते हैं. Okay, so double, let's say length and breadth है. ठीक है. Okay, so in front of that, can we have a public? Okay, yes, no problem. Can we have a private? Yes. Ideally, you should declare your data members as private. Okay, so that is allowed. Then protected हो सकते हैं क्या? Yes. Okay. Default हो सकते हैं क्या? Yes. Then can they be final? Blank final field. Yes. See, the error is, we are getting the error may not have been initialized. So you have to initialize them. Okay. So ये मैंने 8 और 9 से initialize कर दिए. Okay. So you can have a final. Can you have a abstract variable? Abstract illegal modifier. Okay, only हाँ, so we got the answer here. Okay, so क्या क्या हो सकते हैं? It can be public, protected, private. Then you can have a static variable, final variable, transient and volatile. ठीक है, so we are going to ignore this. Okay, so you have this many. Okay, in front of a instance variable you have this. Okay, so ये public हो सकता है, private हो सकता है, then protected, default हो सकता है, then static हो सकता है, final yes हो सकता है, और abstract नहीं हो सकता. ठीक है. Okay, so why we are filling this table? Because in the exam they may have true or false or find the error, such type of question. Okay, so in front of a variable declaration they may put abstract. Okay, so here you have to say error, it is illegal modifier, right? Okay, so that's why we are seeing this all possible combination. Okay, now local variables. Okay, so local variable means the variable defined inside the method. Okay, so let us define one method first. Int a equals to 10. Okay, so this a will be a local variable. Okay, so let us use different modifiers here. Okay. Okay, so inside for a local variable, what we have, only final is permitted. They are saying only final is permitted. So you cannot have even private. Okay, only final and default will be allowed. Okay, जैसे कि ये हटा देने से default scope मिलेगा. Okay, actually scope भी नहीं वो. Now, what is the lifetime of this A? What is the lifetime of this A variable? Inside the brackets. Inside the bracket only. जब तक ये शो एग्जीक्यूशन में रहेगा तब तक ये ए विजिबल रहेगा. ओके, सो ये पैकेज लेवल भी इसका एक्सेस नहीं है. ओके, वी कैन नॉट यूज दिस ए आउटसाइड ऑफ दिस मेथड आल्सो. ठीक है, इट इज विजिबल इनसाइड द शो ओनली. ठीक है, सो ये पूरे क्रॉसेस आएंगे इसमें. सिर्फ फाइनल में ओके अगर वो कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हो तो सिर्फ फाइनल अलाउड है, बाकी सब क्रॉसेस आएंगे. सिर्फ यहाँ पे टिक रहेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, अगर आप कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हो लोकल वेरिएबल को, देन ओनली इट विल हैव दिस. ओके, सो दिस इज द फाइनल टेबल.
Have you understood this? Yes, sir. Okay, we have these three things: class, method, and instance variable. Okay, so can we have a public class? Yes. Can we have a private class? No. Can we have a protected class? No. Okay, so we have summarized this concept. Okay, then the next concept is object class. Okay, anyone has doubt in this table how we have prepared? Okay. The next one is object class. Okay. So now remember all the classes in Java gets inherited from the object class. Okay. All the classes, even if you don't specify this sentence, okay, even if you don't specify extends object. Okay. This object class belongs to java.lang package. Okay, so this object class is coming from this package. Okay, even if you don't specify this shape class will inherit the methods of object class. And how many methods are there in object class? We have total 11 methods. Okay, they are get class, hash code, equals, clone. Sometimes we make use of this method. Okay, generally we use toString. Okay, most commonly use is toString and equals method. Okay, and others are related to threading concept like notify, then wait concept. Okay, so let me show you. This shape method is having show method, right? Shape class is having show method. So let us create the object of shape. So now what is my claim? This shape class is inheriting object class. That is my claim. Even if I don't specify this statement, it is inheriting the object class. Okay, that is my claim. So it should have all the methods from object class. Yes, you can see here it is having all the methods coming from object class, right? So you can say that this shape has inherited object class. समझ में आ रहा है? इनहेरिटेंस के थ्रू वो मेथड्स आ जाएंगे शेप में. ओबीजे किसका ऑब्जेक्ट शेप का है ना? सो व्हेन आई से, सो दिस इज द कोड असिस्टेंट्स. सो यू कैन सी नोटिफाई टू स्ट्रिंग, वेट मेथड, नोटिफाई, hash code, equals method here, right? So they got inherited in this shape class. Okay, all these are public methods, so public है तो inherit हो जाएंगे. Okay, so this is regarding object class. Okay, so object class is a super class of all the existing classes. जो भी आप classes define करोगे, object class उसका super class रहेगा. Okay, so what is the time now? Okay, so we'll cover this topic and then we'll stop. Okay, constructors in subclasses. Okay, so what happens to constructor? Okay, that we'll see. Okay, constructors in inheritance. So we need two classes at least. So we'll define angle. Okay. So what I have done here, shape is our base class and rectangle is extending that class. Okay. Now let us define a constructor for shape. Okay. I'm just printing one message that shapes constructor. Okay, do you remember constructor concept? Okay, its name, so it is like a method, so it will have a round bracket
its name will be equals to the class name and it will not have any return type. अगर यहाँ पे void आ जाता है, so this shape will become a method. Okay, so ये कंस्ट्रक्टर है, so it will not have a return type. इसका पर्पस ये होता है कि वो इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज करता है. ओके, बट जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन आई हैव गिवन वन मैसेज हियर. ओके, और यहाँ पे हम रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट rectangle. Okay, constructor can have a public. Okay, यहाँ पे सिर्फ मैं rectangles constructor. Okay, and okay, so we have a constructor for rectangle, shape, constructor for shape class. This is uh, this is no parameter constructor, right? Okay, so rectangle का object बनाते हैं, obj equals to new rectangle. Okay, that's it. Okay, so now guess the output of this program. Guess the output of this program. Anyone? Rectangles constructor. Okay, so we got one answer, rectangles constructor. Okay, any other answer? Any other answer? Okay, so now I will tell how he got this output. Okay, so here we have created an object of rectangle. Okay, we know that constructor gets called as soon as you create an object, right? Okay, so he is saying that so constructor will be called whose rectangles, right? So you will get rectangles constructor. Okay, but what happens? So when you have the inheritance, this constructor of the subclass, this is a subclass, right? It will implicitly call the constructor of the superclass. Okay, so before executing this line, you have a super call here. Okay, okay, which is implicit. No need to write super call here. Okay, so this rectangle constructor will call the constructor of its superclass, that is shape. Okay, so this constructor will be evoked first. Okay, and then the constructor of this rectangle will get evoked. Okay, plus see, shape is also extending. So we know that in background it is extending object class, right? Object is a father of everything, right? So object का भी constructor call होता है. ठीक है, so कैसे होगा? तो यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ओके, बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट्स बॉडी इट विल मेक अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पैरेंट. इमीडिएट पैरेंट इज शेप. शेप का कंस्ट्रक्टर उसके पैरेंट को कॉल करेगा, दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन द कंट्रोल विल कम बैक टू द शेप कंस्ट्रक्टर. ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से कंट्रोल वापस आएगा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर में, ये एग्जीक्यूट होगा. सो आउटपुट वुड बी शेप्स कंस्ट्रक्टर, रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टर. ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं होता है, वो एम्प्टी होता है. देखिए ऑब्जेक्ट क्लास है तो इसका अगर कंस्ट्रक्टर देखोगे तो ये एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है उसमें, एम्प्टी बॉडी है. ठीक है, सो हमें आउटपुट मिलेगा शेप्स कंस्ट्रक्टर, रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टर. ठीक है, सो लेट अस सी द आउटपुट. सी, सो शेप्स कंस्ट्रक्टर, रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टर. ठीक है, सो रिमेंबर दिस कंसेप्ट. नाउ you should ask me why this is required, why we are
we are having execution like this. Okay, so let me justify this. Okay, so what is the purpose of constructor? To initialize the variables, right? So consider shape में दो variable है, length and breadth. ठीक है, शेप में आइडियली क्या होना चाहिए, इसका इनिशियलाइजेशन होना चाहिए. सो यहाँ पे डबल एल डबल बी है ना. ओके, और यहाँ पे दिस डॉट एल इक्वल्स टू एल, दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी. जनरली कंस्ट्रक्टर का ये यूज होता है, राइट, टू इनिशियलाइज द वेरिएबल. नाउ रेक्टेंगल इज एक्सटेंडिंग शेप, सो ये एल और बी भी इनहेरिट होके आएंगे, है ना. और रेक्टेंगल कैन हैव इट्स ओन वेरिएबल. सो लेट अस डिफाइन टू वेरिएबल ऑफ रेक्टेंगल. सो एल और बी तो इनहेरिट होके आ जाएंगे, और रेक्टेंगल को क्या हो सकता है, डायगोनल, है ना. सो डायगोनल 1, डायगोनल 2. ठीक है. ओके, सो रेक्टेंगल के ये वेरिएबल्स हैं. सो रेक्टेंगल विल इनिशियलाइज दिस टू वेरिएबल. ठीक है, सो यहाँ पे इनका डिक्लेरेशन कर देते हैं. diagonal 1, double diagonal 2, this dot okay. Now what is happening, see, rectangle is extending shape, so this L and B will come through inheritance. ठीक है, but what rectangle is doing, it is initializing its own variables only. What about L and B, right? So this L and B should get initialized via the constructor of shape only. Okay, so what we do, so rectangle should have a call. Now it is parameterized constructor, है ना, ये parameterized constructor है, it is having parameters, right? So it is the responsibility of rectangles constructor to provide the values for its super class constructor. तो ये values assign करेगा. So यहाँ से हम पास करेंगे उसकी values. ठीक है. So see, there is no error now. Okay, so here during the call, so I am passing 100 and 200. ठीक है, so ये 100 and 200 will be caught in diagonal 1 and diagonal 2, है ना. And this diagonal will get 100, diagonal 2 will get 200 value. But what about L and B? Okay, so you will have this super call and you pass these two parameters. Okay, that's why. Okay, so variable will be coming through inheritance, right? So to initialize those variable, we have this restriction. Okay, this phenomena. Okay, so when you have the declaration of object of a subclass, first it will evoke the constructor of a superclass. ठीक है, so it has a cascading effect. So इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये पहले उसके सुपर क्लास को कॉल करेगा एंड सो ऑन. ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हुए लास्ट में सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. ओके, सो व्हाट वी हैव इन नोट्स, initiating a subclass object begins a chain of constructor calls in which the subclass constructor, before performing its own task, explicitly uses super is a keyword, to call one of the constructors in its direct superclass, or implicitly calls the superclass default or no argument constructor. Implicitly, you need not to evoke super keyword. Okay, super keyword use करने की भी जरूरत नहीं है. Implicitly super class का constructor call होगा. Similarly, if the superclass is derived from another, the superclass constructor evokes the constructor of the next class up in the hierarchy. Okay, so let us add one more class here.
So just I am putting some dummy sentences. Okay, so we have a shape class. Shape is inherited in rectangle. I'm defining square class, what is which is extending rectangle class. We know that square is rectangle only, right? Where L equals to B, and it is having its own constructor. Just वहाँ पे मैसेज डिफरेंट है. Okay, and I will be creating an object of square. Now guess the output. Guess the output. Shape is the grandparent. Okay, grandfather. It is inherited in rectangle. So shape में shape का constructor है. Rectangle is extending shape. Rectangle का constructor. Then square is extending rectangle or square का constructor. And here I have created an object of square class. So predict the output. Shape rectangle square. Okay, so we have got one answer, shape rectangle square. Any other answer? Okay, so let us run this. Shape rectangle square, yes. So क्या हुआ? Square का object create किया है. So implicitly constructor evoke होगा, right? So there is an inheritance. So this square constructor will make a call implicitly to a constructor of its superclass, immediate superclass. रेक्टेंगल भी शेप को एक्सटेंड कर रहा है. ओके, सो रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल करेगा उसके पेरेंट को. ओके, कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स पेरेंट विच इज शेप क्लास. ये भी इवोक हुआ. नाउ शेप कंस्ट्रक्टर विल इवोक द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास. ठीक है, जो कि एम्प्टी है, सो कुछ नहीं होगा. सो ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर से कंट्रोल वापस आएगा इनटू द शेप का कंस्ट्रक्टर. शेप प्रिंट होगा, देन रेक्टेंगल प्रिंट होगा और स्क्वायर प्रिंट होगा. सो लास्ट में जो बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर इवोक होगा, शेप रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. Okay, that is the meaning of this line. Similarly, if the superclass is derived from another superclass, the superclass constructor evokes the constructor of next class up in the hierarchy. ठीक है, superclass उसके superclass को constructor को call करेगा and so on. The last constructor called, okay, कौन सा सबसे लास्ट में कॉल किया जाएगा? Will be the object constructor. सबसे लास्ट में कॉल किया जाएगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को. फिर रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. सो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. द ओरिजिनल सब क्लास कंस्ट्रक्टर बॉडी फिनिशेस एग्जीक्यूटिंग लास्ट. ओके, जो ओरिजिनल सब क्लास है उसकी कंस्ट्रक्टर की बॉडी सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगी. ठीक है, each superclass constructor manipulates the subclass instance variables that the subclass object inherits. ठीक है, जो भी मैंने एग्जांपल दिया था L और B और डायगोनल, है ना. सुपर क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है वो डेटा इनिशियलाइज करके देगा. ठीक है, जो भी इनहेरिटेंस के थ्रू बेस क्लास में आने वाले हैं. ठीक है. Okay, so I have demonstrated that. Okay, so we'll continue with this super keyword in next lecture. We have seen one use of this super keyword when you want to pass the values to the superclass constructor, है ना. One use is over. Next uses we will see in next lecture. Any doubt in today's lecture what we have studied? Today we talked about modifiers, right? We already seen the use of static. Today we talked about final. Okay, so final can be applied before method,
variable and classes. When you use final in front of a variable, so the value of that variable will be final. Okay, you cannot change that afterwards. If you don't want to allow method overriding, you declare that method as final. Okay, ये जो implementation है ये final है, don't change it. Okay, in the subclass, so you declare it as final. And class, okay, so complete class is final. Okay, no need, no room of change. Okay, then you declare that class as final. And we have completed this table. Very useful summary of these concepts. Then object class, so object class is a parent of all the classes. Okay, remember that. That's why every class will inherit this 11 methods and constructor in subclasses. Okay, so there is a cascading effect. So you, when you have a hierarchy, okay, so super class, then its subclass, जो कि super class हो सकता है for another subclass. Okay, if you have a hierarchy, and once you create an object of the base class, the bottom one, okay, it will evoke the constructor of its immediate super class. Okay, and so on. ये कॉल हो जाता है. ओके, एंड रिवर्स में एग्जीक्यूशन होगा. ठीक है, दैट्स इट. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ.